So we studied various types of classification of market: local market, regional market, national market, international market, wholesale market, retail market, and so on. Now, in our lecture today, my target is to describe three different types of markets with you. Three different types of market with you. Today we would describe one market, that is perfect competition. The second market we would describe is pure competition. And finally we would describe is monopoly. Three different types of market we will describe. So here, when we describe something about perfect competition, okay, the first type of market what we would describe is perfect competition. Now, what is perfect competitive market? What is perfect competition? See, this can be considered as classification of market on the basis of competition. इसका टाइटल आप दे सकते हो, on the basis of competition, the nature of market. तो perfect competitive market क्या है? Hello, are you able to still hear me? Okay, it prompted me something. Okay, ठीक है. So perfect competition is one type of classification on the basis of competition. So I can say perfect competition refers to the market structure where there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product. Perfect competition refers to the market structure. It's one type of structure of the market. यहाँ पे the number of buyers and sellers are very large and they deal in homogeneous product. So based upon this, now is that visible to you? Can you view it now? Okay. So यहाँ पे इस पे से हम अभी इसके फीचर्स डिस्क्राइब करेंगे. We would describe
features of perfect competition. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. इसके कुछ फीचर्स जो है उसके मीनिंग में ही है. देखो, पहला फीचर देखो इधर है, बायर्स. दूसरा फीचर रिलेटेड टू सेलर्स और तीसरा फीचर रिलेटेड टू प्रोडक्ट. इसके तीन फीचर उसके मीनिंग के अंदर ही है. तो इसका सबसे पहला फीचर जो रहेगा, द वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ दिस मार्केट इज large number of buyers. In a perfect competitive market, the number of buyers is so large that a single buyer cannot influence the market. A single buyer cannot influence the market. अभी जैसे for example, let us take an example that at present, say the average price of potatoes into the market is rupees 25. The average price of potatoes into the market is rupees 25 per kg. अभी फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक बायर से आपकी एक फ्रेंड दिशा टेलर, वो मार्केट में जाती है और मार्केट में सेलर को बोलती है 25 रुपीज पर केजी उसने रेट पूछा. एंड दिशा गोज एंड टेल्स टू द सेलर, नहीं तुम 20 में देगा तो ही लेने का है. सेलर बोलता है टाटा बाय बाय, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एट 20 रुपीज पर केजी. अ सिंगल बायर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग. मगर उस मार्केट में जितने भी बायर्स गए, अगर हर कोई बायर उस सेलर को ऐसे बोलेगा, विल दैट सेलर हैव टू रीथिंक अबाउट द प्राइस? अगर हर एक बायर अगर ऐसा बोलेगा, विल द सेलर हैव टू रीथिंक अबाउट द प्राइस? सर्टनली यस. मतलब in this market, a single buyer cannot influence, but collectively all of them can influence it. Collectively they can influence, but individually they cannot. So the number of buyers are large. They can collectively influence the market. Individually they can't. दूसरा फीचर भी हमको उसके मीनिंग से मिला, large number of sellers. In this market, even the number of sellers are so large that an individual seller cannot influence the market. Again, I say individual seller cannot influence the market, but पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. collectively they can influence the market.
Individually they can't, collectively they can. Collectively they can influence the market. तो अभी इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल देवांशु वर्तक. देवांशु वर्तक ने एक वड़ा पाव का स्टॉल चालू किया. उसने देखा आइडियली सब लोग 12 रुपीज में बेच रहे हैं, वो भी 12 रुपीज में स्टार्टिंग में बेचा उसने. मगर एक दो दिन बेचने के बाद में पता चला भाई तेल भी महंगा है, आलू भी महंगा है, मसाले भी महंगे हैं. वो बोलता है नहीं, आई कैन नॉट सेल इट एट 12 रुपीज. मैं 12 रुपीज में बेचूंगा, मुझको फायदा नहीं होगा. ही स्टार्टेड सेलिंग इट एट 15 रुपीज. व्हाट विल हैपन? वो अगर 15 रुपए में बेच रहा है, 2-3 दिन उसने 12 में बेचा, अभी वो 15 में बेचना चालू करता है, व्हाट विल हैपन? कैन एनीबडी टेल मी? Certainly, customers will reduce. Very correct. The demand will fall down. People will not buy from him. They will go to some other seller. क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेलर ने प्राइस को चेंज किया. And there are many sellers into the market. The buyers will shift to the competitors. तो अभी इसमें क्या होगा कि सपोज इसमें अपने जो वर्तक है, देवांशु वर्तक, उसने स्टॉल चालू किया. उसको पता चला कि भाई 12 रुपए में बेचेंगे तो या तो एकदम कम प्रॉफिट मिल रहा है, आइदर ही इज हैविंग लो प्रॉफिट और ही इज हैविंग नो प्रॉफिट. इसके लिए उसने क्या किया? He went and he met to say आशीष को मिला. देवांशु आशीष को मिला. अभी आप पूछोगे आशीष कौन? तो लेट अस एज्यूम कि वसई विरार बेल्ट का एक एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल कॉल्ड एज वड़ा पाव मेकर्स एसोसिएशन. उनका एक एसोसिएशन है और आशीष जो है वो उस एसोसिएशन का चेयरमैन है, ऐसा एज्यूम करो. तो देवांशु क्या करता है? एसोसिएशन के चेयरमैन को जाके मिलता है, उसको सब एक्सप्लेन करता है कि देखो मैं कॉमर्स से पढ़ा हुआ हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ, मुझको पता चल रहा है कि इसमें हमको या तो लो प्रॉफिट है या तो नो प्रॉफिट है. तो एक काम करो, तुम एसोसिएशन की तरफ से सबको एक फिक्स स्टैंडर्ड रेट करके दे दो, 15 रुपए में बेचने का सबने. आशीष भी समझता है, बराबर एक्सप्लेन कर रहा है. और अभी एसोसिएशन ने उसके सारे मेंबर्स को बोल दिया कि तुम 15 रुपए में बेचो. Now all the sellers will sell at same price. Will it influence the demand of the product of Devanshu? अभी होगा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस. अभी इन्फ्लुएंस होगा. नेपोलियन, लैंस नेपोलियन, क्या इफेक्ट होगा बताओ? यू सेड इट विल इन्फ्लुएंस हिज डिमांड. क्या इन्फ्लुएंस होगा बताओ? Can anybody tell me what influence it will take up? कुछ अंदाजा लगा सकते हो आप लोग? टोटल मार्केट सप्लाई क्या होगा अनिकेत?
सबका प्राइस सेम होने के वजह से देवांशु के प्रोडक्ट का डिमांड कम नहीं होगा, देवांशु के प्रोडक्ट का डिमांड कम नहीं होगा। तो collectively they can influence the market, individually they cannot। समझ रहे हैं सबको? मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स ये इतने लार्ज है that a single seller or a single buyer cannot influence the market. They cannot influence the demand, they cannot influence the supply individually. Collectively they can. इसका तीसरा फीचर है homogeneous product. The third very important feature of perfect competition is homogeneous product. Perfect competition will deal with a product which is homogeneous product. Many people call it as identical product. Many people call it as identical product. The products which are same in size, shape, color, flavor, etc. will be called as homogeneous, or they will be called as identical products. So, in a perfect competitive market, the products are identical, homogeneous. They will not deal with same product, but they will deal with similar product. अभी जैसे आई कैन से होमोजीनियस प्रोडक्ट बोल दिया, मतलब कैसा? तो वी कैन टेक एग्जांपल कि आपको मार्केट में गुड डे बिस्किट आता है, राइट? गुड डे बिस्किट के जैसा ही और एक बिस्किट आता है कॉल्ड एज 2020। सेम प्रोडक्ट नहीं है बट वेरी सिमिलर। पार्ले जी आता है, उसके जैसा ही टाइगर बिस्किट आता है, उसके जैसा ही वी कैन से पतंजलि का दूध बिस्कुट। मतलब these are all examples where the products are identical. They are not exactly same, but they are identical. अभी देखो ना, 50 तरह के सैनिटाइजर्स आते हैं मार्केट में। दे हर किसी का प्रोडक्ट डिफरेंट है, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर, so they are to be called as homogeneous product. Next feature of this market is free entry and exit. Free entry and exit. Now, in a perfect competitive market, there exists free entry and exit to the seller, to the producer. Matlab, if any businessman wants to start his new business in this type of market, there are no restrictions on him to start this type of business. No restrictions, he can directly start the business. और कोई एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन को अगर उसका बिजनेस बंद करना है तो बंद करने पे भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। द बिजनेसमैन आर फ्री टू स्टार्ट देयर बिजनेस and free to close their business. No restrictions on them. Then that concept is called free entry and exit.
Then fifth important feature of this type of market we have is perfect knowledge about market. In a perfect competitive market, the buyer and the seller, again I repeat, the buyer and the seller have perfect knowledge about the market. They have perfect knowledge about the market. That is, the buyer and seller know everything about the product, about its characteristics, about its price, about availability of substitutes and etc. etc. हर चीज का परफेक्ट नॉलेज रहेगा बायर के पास भी और सेलर के पास भी. Sixth feature we have is perfect mobility of